you. अच्छा मुझे बोलना है. शिला प्रभुपाद की जय. ओम अज्ञानतिरन्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवं श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सहगण ललिता श्री विशाखा वितां सा. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते. तत्व कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी परमाणि हरि प्रिये. वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा. हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा रामा हरे हरे. कृष्ण की जय. शिला प्रभुपाद की जय. जय. नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते देवी गोविंद स्वामी नामिने. नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने. नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. So welcome everyone. Preeti, YG, Bharti, Anjali and Veena. Krishna. So we did till 6th chapter, 6th verse, right? I think I think we did seventh. We have to start from it. Good job. Oh, you were testing us. 6.7. Yes, and now we will do 6.8. Prabhupada's explanation of these verses as I was reading today, 8, 9 and 10 is amazing. आपने जो book लिया ना अंजलि जरूर पढ़िएगा. It's such an amazing explanation. But इतनी simple. मतलब the way he has simplified it. Complicated recipe को अगर कोई simplify करके दे दे तो आपको कितना confidence आ जाता है कि मैं भी ये बना सकती हूँ, you know? Otherwise वो रेसिपी को ही आप देखकर छोड़ दोगे कि ये मैं कभी नहीं बना सकती. This is the contribution of Prabhupada to our lives, you know, something which is as pechida and as difficult to understand as self-realization. He has made it so simple by coining Krishna consciousness, and he has made us ISKCON. He has given us a morning program. He has given us 4 regulative principles and chanting. और ऐसे लगता है हम ये कर सकते हैं. YG? ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टा क्षमकांचनः. A person is said to be established in self-realization and is called a yogi or mystic when he is fully satisfied by virtue of acquired knowledge and realization. Such a person is situated in transcendence and is self-controlled. He sees everything, whether it be pebbles, stones, or gold, as the same. Okay. Book knowledge without realization of the supreme truth is useless. पहला ही bomb
गिरा दिया उन्होंने. बुकिश नॉलेज, सारे वर्सेस आते हैं, सब कुछ बाय हार्ट है, बट विदाउट रियलाइजेशन कि इसका मीनिंग क्या है. एंड रियलाइजेशन मतलब प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग. अगर नहीं पता है, इट इज यूजलेस. This is stated as follows. Now he has quoted a verse from the Chaitanya Charitamrita. Atah Shri Krishna namadi na bhavet priyam indriyaiha sevan mukhe hi jihvadam swayameva spurtyadaha. This is spoken by Chaitanya Mahaprabhu. No one can understand the transcendental nature of the name, form, quality and pastimes of Shri Krishna through his materially contaminated senses. Only when one becomes spiritually saturated by transcendental service to the Lord are the transcendental name, form, qualities and pastimes of the Lord revealed to him. This is from the Bhakti Rasamrit Sindhu written by Rupa Goswami. So, two he has quoted. Atah Shri Krishna Namadi is one verse, और दूसरे वर्स का उन्होंने केवल ट्रांसलेशन दिया है without giving the verse. So he is giving two what is the word? Proofs, I should say. Just a moment. Yeah. So this Bhagwad Gita is the science of Krishna consciousness. No one can become Krishna conscious simply by mundane scholarship. Matlab reading or by hearting. One must be fortunate enough to associate with a person who is in pure consciousness. Fortunately, we have Srila Prabhupada for that. A Krishna conscious person has realized knowledge by the grace of Krishna because he is satisfied with pure devotional service. By realized knowledge, one becomes perfect. What is he trying to say here? That you will get satisfaction. Okay, I'll read the purport and then I'll say. By transcendental knowledge, one can remain steady in his convictions. But by mere academic knowledge, one can be easily deluded and confused by apparent contradictions. It is the self-realized soul who is actually self-controlled because he is surrendered to Krishna. He is transcendental because he has nothing to do with mundane scholarship. For him, mundane scholarship and mental speculation, which may be as good as gold to others, are of no greater value than pebbles or stones. So, Jnana Vijnana Tripta Atma. Prabhupada is saying, Gyan means theoretical knowledge and Vigyan means practical knowledge. Realized knowledge means practical knowledge. एक तो होती है information, दूसरा होता है understanding of that, practical understanding of that information. So, Jnana Vijnana Triptatma. Only with Vigyan can you get a Triptatma, not with Gyan. Only with knowledge or information, you will not be able to get peace or happiness or Tript Atma, content soul. That you can get only with Vigyan. Kutastho Vijitendriyaha. Kutastha. Kutastha means if you are spiritually situated, if you have faith in spiritual knowledge. Vijita Indriyaha. If you are Kutastho, if you have realized spiritual knowledge,
Then Vijitendriyaha, your senses will be controlled, or at least you will start living a life which is controlling the senses, which is based on control of senses, not on satisfying the senses. This is the first practical application of transcendental knowledge. What is material world? Prabhupada explains very clearly in just one word. Materialistic life means satisfying your senses. Everything that this world produces is actually to entice you or invite you to enjoy your senses. And spiritual knowledge is just the opposite. It is telling you to control the senses. इसीलिए spiritual subject matters में लोग नहीं आते ना, because they are having fun, and the spiritual knowledge is telling them control yourself. So whoever has practically realized spiritual knowledge, immediately you will start seeing a change in his life where he has started moving towards controlling his senses. This is Vigyan. Gyan is, हाँ, हमें पता है, I am not this body, I am this soul. Everybody knows. India में तो हर आदमी को कर्म और आत्मा के बारे में पता है. मतलब the moment he is born, he has heard these two words. ये तो भाई कर्मों का खेल है. And दूसरा, हाँ, हम सब आत्मा है. शरीर तो जी नश्वर है, शरीर तो मिट्टी है, मिल जाएगा. है, लेकिन हम सब आत्मा है. Knowledge सबको पता है. This is ज्ञान. But how many are practicing Vigyan? How many are actually living like an Atma, or at least trying to live like an Atma? They say, हाँ, हम ये शरीर अलग है, आत्मा अलग है, हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है. लेकिन they do all kinds of sense gratificatory activities, all kinds of enjoyments with their senses, and increasing it, adopting a lifestyle which increases this enjoyment more and more. So that's just bogus. It's just gyan. You could just be a Nobel Peace Prize winner with a lot of information, like that Pandit sitting in a boat and, criticizing the boatman. You don't know Vigyan, you don't know Vigyan, you don't know astronomy, you don't know geography, you don't know history, you know nothing, तुम्हें तो पढ़ना लिखना भी नहीं आता. And the moment there is a storm, the boatman jumps, swims, saves his life. That Pandit, he is just a Jnani, not Vigyan, does not know how to swim, dies. Because the boatman says, Pandit ji, वो बात तो ठीक है, नहीं आती मुझे जियोलॉजी, लेकिन स्टॉर्म आ रही है, तूफान आ रहा है, तैरना आता है? नहीं आता. ओहो, 100% of your life is gone. मेरी तो आप बता रहे थे 70% लाइफ वेस्ट है, आपकी तो 100% वेस्ट हो जाएगी. Okay, bye. So practical knowledge will save your life, not theoretical knowledge. Okay, this is the first line. Gyan Vigyan Triptatma Kutastho Vijitendriya. Vijitendriya means controlling. Indriya. इंद्रियों को विजय, इंद्रियों पे विजय कर लेना, मतलब you are controlling your इंद्रिया. युक्त इति उच्यते योगी. युक्तः इति उच्यते. It is said, युक्तः means those who are competent, those who are qualified. Sama loshtrashma kanchana. Sama means same. Loshtrashma. Loshtrashma means stones, pathar. And kanchan means gold. When only such a person will be considered a yogi who considers loshtrashma, pathar and kanchan, gold as sama. जब कोई आदमी इस लेवल तक पहुंच जाए, मतलब he is a विज्ञानी. He is the real scientist, because he has elevated, he has controlled his senses to such an extent that now he is not even disturbed if you show him great wealth. Neither is he disturbed if you leave him in a jungle full of stones and in a hut. Nothing is able to disturb him. Such a person is a real yogi.
So practical application is most important of whatever spiritual knowledge we are acquiring. Otherwise, it will not give you the results you are seeking, which is happiness, peace, equilibrium. Okay, clear? All right, next verse. Vanita, I just had a question. Yeah. He actually, makes a comparison between pebbles and gold here, and he says that whoever is not disturbed whether it is a pebble or not, and looks at it in the same way. So that's the state that we have to reach. I'm curious, we read somewhere, I think it is 5.18. I'm just trying to see whether there is a connection between these two verses, where he says, where a person actually looks at a Brahmin and the cow in the same way. Yes. Pandita Samadarshana. Excellent. Samadarshana, right? Okay. Yes. So I just. Amazing, Vaiji. You are able to connect the verses. In fact, Prabhupada has mentioned this very line, Panditaha Samadarshana. Samadarshana. Okay. Yes. Vidya Vinaya Sampanne Brahman Gavi Hastini Shuni Chaiva Swapakecha Pandita Samadarshina. Okay. Yes, absolutely. He sees with equal vision a learned and gentle Brahmin, a cow, an elephant, a dog, and a dog eater. Right. All as the same. Well, how has he reached that stage? He's actually living a life of I am soul, not this body. तो वो सब में सोल ही देख रहा है, बॉडी तो देख ही नहीं रहा. बॉडी तो कपड़ा पहना हुआ है, कपड़े से वो अफेक्ट ही नहीं हो रहा. वो ये देख रहा है इस कुत्ते में और ये मीट खाने वाले में भी वही सोल है जो मेरे अंदर है. हम सब भाई भाई. That does not mean that he is going to go and hug that murderer or that dog eater or make him his friend or start taking his association. This is not what it means. But he will not judge him. उनके मन में कोई घृणा नहीं होगी, कोई he will not have any revengeful feelings for him. He will just be samadarshana. He's just neutral. The meaning of this verse is that his attitude or his behavior will be neutral with everyone. This is the meaning of Pandita and Samadarshana. Association वो highly qualified लोगों का ही लेगा. But he will be neutral. Very nice, Vaiji. So. Thank you. I'm listening. Okay, so next verse you can read. Okay. Suhran Yudasina Madhyastattvesha Bandhushu Sadhushvapi cha Papeshu Samabuddhir Vishishyate. A person is considered still further advanced when he regards honest well-wishers, affectionate benefactors, the neutral mediators, the envious friends and enemies, the pious and the sinners, all with an equal mind. So this is a repetition of 5.19. Panditaha Samadarshana. वहाँ तो अलग-अलग species, living beings की बात की गई. कुत्ता भी आ गया, गाय भी आ गई, elephant भी आ गया, है ना? इसमें human beings की अलग-अलग varieties की बात की जा रही है, जो हमसे ईर्ष्या रखते हैं, जिनके मन में रिवेंज है हमारे लिए, या ईर्ष्या है, या इल फीलिंग्स हैं, जो हमारे फ्रेंड्स हैं, जो न्यूट्रल हैं हमारी तरफ, ना दोस्त ना दुश्मन, जो दुश्मन है कट्टर दुश्मनी निभा रहे हैं, है ना, जो बहुत सात्विक हैं, पायस हैं, वेरी रिलीजियस, जो हमारे वेल विशर्स हैं, वेरी अफेक्शनेट टुवर्ड्स अस, जो हमारे बेनिफैक्टर्स हैं. हमारा बेनिफैक्टर्स मतलब जो हमें बेनिफिट पहुंचा रहे हैं, हमारे हित में काम कर रहे हैं, सब all of them he sees with an equal mind. This is the practical application. इसका मतलब he is actually practically following
स्पिरिचुअल लाइफ। केवल वो श्लोकास पढ़ के बाय हार्ट नहीं कर रहा है, बट ही इज फॉलोइंग द प्रोसेस, ही इज फॉलोइंग द एग्जैक्ट रेसिपी दैट हैज बीन गिवन। तो डिश उसकी सक्सेसफुल बन ही जाएगी, टेस्टी ही बनेगी उसकी डिश। तो हम सब भी यहाँ एक रेसिपी हमें मिली है और हम सब अपनी इंडिपेंडेंट कुकिंग कर रहे हैं अपने अपने किचन में। All of us are cooking this recipe of Bhagwad Gita, and each of us will get to eat their own cooking only. एक दूसरे का साथ दे सकते हैं, एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं, एक दूसरे से रेसिपी शेयर कर सकते हैं, डाउट्स उनके रेसिपी के बारे में हम उनके डाउट्स रिमूव कर सकते हैं, लेकिन कुकिंग सबको अपनी इंडिपेंडेंट ही करनी है, बिकॉज दिस इज अ प्रैक्टिकल क्लास, दिस इज नॉट एन ऑनलाइन theoretical class. At the end of the day, a dish has to be ready जिससे पेट भर सके. The success of your knowledge or of attending the class will be कि आपने ऐसी डिश बनाई जिसने आपका पेट भरा. करेक्ट? यही हुआ ना प्रैक्टिकल नॉलेज, जिससे आपकी आत्मा तृप्त हुई, आपने चेंज लाया अपनी लाइफ में. जो रेसिपी बताई है उसको वैसे ही फॉलो करने की कोशिश की, then you will get something to eat. Otherwise, you can keep on attending these classes 1 year, 2 years, 3 years, 4 years, no change. 4 साल पहले भी कड़ी भूख लगी हुई थी, आज भी वही कड़ी भूख लगी हुई है. Still suffering from hunger and thirst. है ना powerful example? So इंग्लिश में भी है ना ये एक कहावत, द प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन द ईटिंग. मैं जितनी मर्जी इंस्टाग्राम पे उसकी इंटरेस्टिंग पिक्चर्स खींच के डाल दूं, वीडियो उसका बना दूं, है ना, उसको अट्रैक्टिव एंगल से उसका खींच लूं, पुडिंग का फोटो खींच के डाल दूं, उसका सक्सेस या उसकी असलियत तभी पता चलेगी जब कोई उसको आके चखेगा कि वाकई ये उतनी ही स्वाद है जितनी दिख रही है, और इससे पेट भर रहा है, इससे तृप्ति मिल रही है. जो हमारी स्वीट बड्स हैं, क्रेविंग्स हैं, क्या ये उतनी ही स्वीट लग रही है टंग को? द प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन द ईटिंग. दिस इज व्हाट प्रभुपाद आल्सो सेज. यू कैन शो आउटवर्डली हम भक्ति कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं. जब फाइनल एग्जाम आएगा, व्हिच इज द फाइनल एग्जाम, व्हिच इज आवर फाइनल एग्जाम, जिसके लिए हम ये सारी तैयारी कर रहे हैं. क्वेश्चन पेपर लीक हो चुका है, उसका एग्जाम का क्वेश्चन पेपर भी लीक हो चुका है, सिर्फ डेट नहीं बताई है एग्जाम की. Krishna has even leaked this body. Sorry? When we the have to death, leave this this body, when we leave Death. this body. when death Death. approaches. Death is the final exam. So question paper release हो चुका है. All of us know that this is going to come. सिर्फ डेट सरप्राइज टेस्ट होगा, डेट नहीं बताई एग्जाम की. और टाइम क्या दिया है प्रिपरेशन के लिए? ऑल योर लाइफ, पूरा टाइम मिला है उस फाइनल एग्जाम की तैयारी के लिए. लेकिन असली टेस्ट कब होगा? जब क्वेश्चन पेपर आएगा, एंड हाउ यू डील विद इट विल बी द टेस्ट. क्या केवल ज्ञान था या विज्ञान भी था? केवल थियोरी ही पढ़ रहे थे या प्रैक्टिकल भी कुछ किया उस थियोरी को लेकर? Yeah. So Prabhupada always used to say, if you are cheating, you're cheating only yourself. Because when the exam comes, you only have to, give the answer. कोई वहां तुम्हें हेल्प करने के लिए खड़ा नहीं होगा. तो तुमने अगर अपने आप को नहीं प्रिपेयर किया, चीट किया, नहीं मैं कर रहा हूँ, मैं कर रही हूँ, मैंने ये भी छोड़ दिया, वो भी छोड़ दिया, मैं सब कर रही हूँ, तो only you will be the one who is suffering at that time. तो ये बहुत क्रूशियल है कि हम सिंसियरिटी से करें. Nobody is looking at perfection. Nobody is asking you 10 में से 10 नंबर लाओ, क्या क्या कर लिया, कितना कर लिया. Nobody is doing that. Everybody is only seeing whether you are sincerely following, even if it is 1 step at a time, even if it is 2 steps at a time. But are you sincerely taking those baby steps of sense control? है ना? Or are you, yes Bharti?
In this, like, I want to ask, like, practical knowledge, what you say, विज्ञान में वो भी तो आएगा, how we behave in day to day life, like what we have learned last 4 years, like spiritually, and what, like, जो अभी आपने कहा कि पुडिंग बना ली, उसको फिर जब तक खाएंगे नहीं, तो the thing which we are learning, so how we are implementing in our day to day life, the behave, the attitude, it also includes the part of that विज्ञान only, na? Yes, beta, in fact, spiritual life is about behavior only. It is 100% behavior only. I'm saying that the all the life, like you can say the full day, what we are spending with our family, the way we are living, all that, it also includes that also, no? Huh? Huh? Absolutely. Also, जो हमें मुश्किलें आ रही हैं, है ना, या हमें जो भी डिफिकल्ट सिचुएशंस आ गई हमारे सामने, कोई मन मुटाव हो गया, तो उसकी तरफ कैसा आपने उसको डील कैसे किया? Right. Initially you may deal with it rashly, but आपने कितनी जल्दी अपने आप को संभाल लिया, कितनी जल्दी आप न्यूट्रल हो गए, कितनी जल्दी आप अपने आप को संभाल के अगेन यू कंटिन्यूड ऑन दैट पाथ, है ना? बिकॉज ऑल ऑफ अस आर प्रैक्टिसिंग डिवोटीज, हम नित्य सिद्धा तो है नहीं, वी आर ऑल प्रैक्टिसिंग डिवोटीज, है ना? बट द टेस्ट इज कि जब मुश्किलें आती हैं, when you go into difficulty in relationships with friends, with peers, in family, or in class, or with relatives, whatever. So yes, you will behave according to your nature, but then how quickly you remember, that the subject matter of the Bhagwad Gita that you are reading for the past so many years, and you take those corrective actions, is the test of practical application. और मन में कितना vengeance लेकर चल रहे हो, या मन साफ है, you are able to move on without any grudges, है ना? मुश्किलें तो आएंगी, human beings है, we cannot say कि मुझे तो कभी दुख होगा ही नहीं, मुझे तो कभी गुस्सा आएगा ही नहीं. That's not what it means. We will still be getting angry, and getting annoyed, feeling bad, and all these things. But then आप कितनी जल्दी अपने आप को संभाल पाते, and you are able to move on with the same faith, with the same passion. Enthusiasm कम नहीं हुआ, enthusiasm उतना ही रहा, and you are continuing, still continuing. मुश्किल है, लेकिन फिर भी one more step, and trying to bend your ways and behavior is vigyan, practical application, है ना? Nobody is looking for perfection, कि हम ये सब चीजें करेंगे नहीं, but you can tell how quickly or how you managed conflict. Thank you. Yeah. So now we are talking about 9. So 9 का प्रभुपाद ने कोई purport नहीं दिया, because it is self-explanatory. Like YG just said, it's like you can write a note here that 6.9 is the same as 5.19. He's repeating. Krishna is repeating. So Prabhupada is saying material life means sense gratification, and spiritual life means detachment from sense gratification. Then, Prashant Atma uses this word again and again. Prashant Atma means, what is the practical realization of spiritual life? Mind is Prashant Atma, calm and quiet, no longer agitated by friends, by envious people. You come back and you resume your spiritual life. Okay, YG, 10. योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीर परिग्रहः. A transcendentalist
should always engage his body, mind, and self in relationship with the Supreme. He should live alone in a secluded place and should always carefully control his mind. He should be free from desires and feelings of possessiveness. So here he is explaining actual yoga kya hai. You can compare it with all the millions of yoga classes going on all over the world. You know, all the kinds of yoga that's going on in the world. Compare that to this, the real yoga. क्या है इसमें? Yogi Yunjita. Yunjita means concentrating in Krishna consciousness. Haribo. Okay, Parth has just come from his exam. Just give me 2 minutes. हरि बोल. Hare Krishna. कैसा हुआ पाठ? Hare Krishna. It was good, Mataji's. Was it economics today? Yeah, it was. Okay. अच्छा था? Huh? Finished it? Yes. He's looking very happy ना वनीता? Yes, he's looking satisfied. जबकि आज मैं इसको लेट हो गई ड्रॉप करने में. He was late for the exam. Oh my God. He कितना लेट हो गया? वो तो लेट होने पे एंट्री बंद कर देते हैं ना, I think. नहीं, it was reading time में ही था, मतलब बस थोड़ा Okay. 5 मिनट. अच्छा. Please eat food. It's in the kitchen. आप देख लो 2 मिनट अगर आप. Yeah, please just see. खा लेगा. He's a big boy. हम इतने कीर्तन कर लेते हैं थोड़ा सा. अच्छा ठीक है. So exam 2 बजे होता है and they give the paper at 1:45. 15 मिनट रीडिंग टाइम देते हैं. Reading time. आप इसको अच्छे से पढ़ लो और फिर 2 बजे. तो आई थिंक ही रीच्ड 2 बजे. ही मिस्ड ऑल हिज रीडिंग टाइम. वो भी क्रूशियल होता है ना. Yeah, पैनिक हो जाते हैं बच्चे ना. हाँ, there was too much traffic. I don't know हमको और कहाँ पे पड़ा है इसका सेंटर? Where is the center now? स्कूल ही सेंटर है. Okay, Midushi's got this. Midushi का वो Sun City. It's a nice school. Yeah, it's a nice one. हाँ. Which her center is there, Sun आज City. उसका पहला दिन था. नहीं, उसका फर्स्ट है 13th को. अभी नहीं अभी शुरू. शुरू नहीं हुआ. और उसके अभी एंट्रेंस है, 8th को एंट्रेंस है क्लैट का. तो अभी तो वो she's all through with that only. साइड बाय साइड दोनों चीज है, बोर्ड्स प्लस एंट्रेंस उसका ना. I pity these children. This batch is worse. मतलब वो ड्यू का जो एंट्रेंस शुरू हुआ है इस साल से शुरू हुआ है. हाँ. तो उसमें उन्होंने पोर्टल पे फॉर्म अपलोड करने के बाद एक नया क्लॉज डाल दिया कि इसको हम करेक्शंस के लिए खुला रखेंगे. क्यों? क्योंकि हर हफ्ते they are changing Changing. the rules. They are themselves confused. Imagine Yeah. बच्चों के ऊपर क्या गुजर रही होगी. Seriously, तो they उन्होंने are कहा यार इसको करेक्ट कर सकते. हाँ, है ना. रोज रूल बदल रहे हैं. नहीं ये चाहिए होगा, ये नहीं ये चाहिए होगा. I don't know how they are managing really. मैं तो I'm not even involved. अपने आप ही कर रहा है. Okay, I'll just see him after. चलो भारती आप करोगे कीर्तन थोड़ा सा. मैं कर लेती हूँ. स्टार्ट करो. जयो राधा माधव जयो कुंज बिहारी जयो राधा माधव जयो बिहारी यशोदानंदन व्रज जन नंदन यशोदानंदन व्रज यशोदानंदन ब्रज जन वनचारी जयो जयो कुंज बिहारी जयो राधा माधव जयो कुंज बिहारी जय सचिनंदन जय सचिनंदन
जय सचिनंदन गौर हरि, जय राधा माधव, जय राधा माधव, जय राधा माधव गौर हरि, जय जगन्नाथ, जय बलदेव, जय सुभद्रा, जय सुदर्शना, जय जगन्नाथ, जय बलदेव, जय सुभद्रा, जय सुदर्शना, जय सीता राम लक्ष्मण हनुमान, सीता राम लक्ष्मण हनुमान, जय हो राधा पार्षदी, राधा पार्षदी राधे, जय 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 गुरुदेव, गुरुदेव, जय 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 गुरुदेव, जय श्रीला प्रभुपाद, प्रभुपाद, श्रीला प्रभुपाद, जय 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 गुरुदेव, जय हो गुरुदेव, जय 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 गुरुदेव। जय राधा माधव की जय। हरि बोल, हरि बोल, गीता गौर गौर हरि बोल, हरि हरि बोल, बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय जय श्री राधे। राधे। हे श्याम। और कहाँ घूम लिए वीनू, इतनी गर्मी हो रही है अब? हाँ पूरा वृंदावन गए, बिहारी जी, इस्कॉन अच्छा। टेम्पल, अच्छा, और सब जगह गए। हाँ, और ये राधा रमन, और फिर उसके बाद परिक्रमा लगाई, राधा कुंड वगैरह सब ना। परिक्रमा कौन लगा। कौन गए थे? सब गए थे। हम आप- 5 थे, मेरी नंद और नंदोई थे वहां पर, और मौसी सास थी, हम 8 लोग थे। आंटी भी चली? हाँ तबीयत ठीक है उनकी? हाँ, ठीक है, अब ठीक है। वीनू, आपने वो बिहारी जी के चरण दर्शन भी करे फिर उस दिन? नहीं, वो परसों थे, हम कल गए ना। अक्षय तृतीया पे तो बहुत रश था। हमारा प्लान था सुबह 4 बजे निकलने का। फिर वो पंडित जी है हमारे एक नोन वहां पे बिहारी जी, उन्होंने कहा कि अगर आप 8 बजे तक आ जाओ तो ठीक है। उसके बाद तो सारे रास्ते बंद कर रहे थे वो लोग ना। हाँ, फिर वो थोड़ा सा टाइम क्लैश कर गया क्लास के संग विदुषी का। अदरवाइज हमारा पूरा प्लान था, मेरा और मेरे हस्बैंड का, कि 4 o'clock हम लोग निकल जाएंगे। कल ठीक था, कल ठीक था। कल तो हाँ, उस दिन तो बहुत था, काफी होता है। ठीक है। और आप लोग आ रहे हो उस दिन क्या, मीना दी क्या सब? मैं तो आऊंगी, अंजलि अभी बताएगी। अंजलि का मिठाई Yeah, unfortunately, I won't be able to make it. Come on, why just try. I see one board exam, then I have another kid also. My mom is also here, and work. I had my lunch at 3 o'clock. Actually, I was like really hoping no, I shouldn't miss today's class. So, just so crazy, it is. But I really want. Let's see, Krishna willing, it'll happen soon. Okay, sorry for the interruption. Can we resume? Can we resume? Yeah. Oh, Anuradha has joined. Okay. Okay. We were doing which one? We were doing 9? No, 9 we did. 10. Now 10. 10. So, देखो योगी से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? एक्चुअली योगी क्या है कृष्ण बता रहे हैं. He is a real yogi. What does he do? सतत आत्मनाम रहसी स्थितः. सतत आत्मनाम means satat means constantly, non-stop. रहसी स्थितः. What is रहसी? लगे रहना एकांत स्थान में। नहीं, रहसी मीन्स दुनिया से दूर, सेक्लूजन, वही एकांत स्थान पे, वही एकांत तो स्थान कहाँ में मिलेगा? जंगल में ही मिलेगा, या जंगल में या पहाड़ों में. So real yoga is this, to be secluded. You cannot be in the material world. क्यों?
बिकॉज मटेरियल वर्ल्ड मीन्स सेंस एंजॉयमेंट. हर पग पे, हर नुक्कड़ पे, गली कूचे में इंद्रियों के भोग के लिए सामान पड़ा हुआ है. और अगर आपको योगा करना है तो आपको इन सारे भोग की चीजों से दूर जाना पड़ेगा, जंगल में, और जंगल ही मिलेगा. So first is he has to be rahasi, he has to be in a secluded place, स्थितः, है ना. he has to stay there. एकाकी, alone, अकेले रहना है. ये नहीं कि आजा टीनू मीनू चीनू पिनू सब चलते हैं एकाकी रहने के लिए. That's not ekaki. You leave everything behind, everyone behind, and you go and I stay think, there alone. Mataji, the way the trees are cutting in the forest are now no more, तो वो एकांकी भी खत्म हो जाएगा, मुझे जो लग रहा है जो. इसलिए तो चैतन्य महाप्रभु came, that all these things will not be possible for Kalyug people. इसीलिए तो वो हरिनाम संकीर्तन लेकर आए कि जहां हो, जहां रह रहे हो, किस स्थिति में हो, गृहस्थाश्रम में हो, वहीं बैठे बैठे हरे कृष्ण महामंत्र का संकीर्तन करो भक्तों के साथ. ये डुएबल है कि नहीं? Yes. ठीक है. सो एकाकी. देन यतचित्ता, है ना. यतचित्ता मीन्स always careful in your mind. Nirashiha. Nirashiha means without being attracted by anything else. Aparigraha. Aparigraha means free from the feeling of possessiveness. मतलब कोई उसमें desires नहीं है. He is next verse में है क्या? Half eyes closed. Yeah, that's in the next this thing. Free from desires, he should carefully control his mind. Now, sitting here alone, he should try and control his mind. So, Prabhupada is saying that Krishna is realized in 3 ways. Brahman, which is kindergarten understanding, Paramatma, which is graduation, and then Krishna, which is MPhil, PhD. Post graduate. तो 3 तरह के अंडरस्टैंडिंग्स हैं भगवान के. So इनमें से कृष्ण कॉन्शियसनेस मीन्स ऑलवेज टू बी एंगेज्ड इन सेवा. कृष्ण कॉन्शियसनेस का मतलब ही है ऑलवेज टू बी एंगेज्ड इन सर्विस. बट दोज हु आर अटैच्ड टू द इम्पर्सनल ब्रह्मन, जिनको ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि भगवान एक पर्सन है, एक है ना, जिनके एक व्यक्तित्व है, उनकी लाइक्स एंड डिसलाइक्स हैं, जिनको लगता है कि भगवान तो कुछ नहीं होता, ये सारी जो यूनिवर्स है, ये जो सारी मदर नेचर है, यही भगवान है, इम्पर्सनल फॉर्म है. Those who are attracted to that, or those who are attracted to the परमात्मा inside, like this योगी. योगी कहाँ तक पहुंच सकते हैं? मैक्सिमम परमात्मा तक. और परमात्मा is a 4-handed form. चतुर्भुज विष्णु is परमात्मा. It's not Krishna. परमात्मा is the expansion of Krishna, the चतुर्भुज विष्णु form, है ना. तो ये 2 तरह के जो लोग हैं, जो ब्रह्मन को ढूंढ रहे हैं या जो परमात्मा को ढूंढ रहे हैं, आर ऑल्सो पार्शियली कृष्ण कॉन्शियस. उनको भी हम कृष्ण कॉन्शियस मानेंगे, क्योंकि कम से कम भगवान को तो ढूंढ रहे हैं, सीरियस तो है, लेकिन पार्शियली कृष्ण कॉन्शियस है. क्यों? कोई बता सकता है? दे आर पार्शियली कृष्ण कॉन्शियस, नॉट फुली कृष्ण कॉन्शियस. व्हाई? व्हाट इज मिसिंग? अभी भी ढूंढ रहे हैं माता जी. ढूंढ मतलब अभी पार्शली इसलिए कि अभी उनको पूरा ये नहीं विश्वास कि कृष्णा ही है जो कुछ है. So what is missing in their spiritual practice? विश्वास, फेथ जी, फेथ. नहीं, फेथ तो है, इसीलिए वो नास्तिक नहीं बने, है ना. अच्छा जी. वो हाँ. भौतिकवादों की तरफ नहीं गए. वो पूरी कोशिश जी जान से ब्रह्मन या परमात्मा को ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो पार्शियली कृष्ण कॉन्शियस है. व्हाट इज दैट वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट व्हिच इज मिसिंग? जो भगवान को बीच में रख के जो- सारे काम नहीं कर रहे हैं. The complete bhakti. सेवा. यस, भगवान को बीच में रख के सारे काम नहीं कर रहे हैं. नहीं कर रहे हैं जी. सेवा हाँ. इज मिसिंग. अगेन विज्ञान इज मिसिंग. ज्ञान है, जी. हाँ. प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं है. So seva is missing. They are just going by their own understanding. They are not serving the Lord.
है ना, जो नेचर लवर्स होते हैं और वो क्या करते हैं, नेचर को मिसयूज भी करते हैं, नेचर को डिस्ट्रॉय भी करते हैं, लेकिन नेचर लवर्स हैं। लेकिन अगर कोई कृष्ण कॉन्शियस नेचर लवर होगा, वो सबसे पहले नेचर को पूजेगा, नेचर को रिस्पेक्ट देगा, और नेचर को अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए एंगेज नहीं करेगा। दिस इज द डिफरेंस। तो सेवा की कमी। और तो माता जी विज्ञान इज इक्वल टू सेवा। यस, विज्ञान इज इक्वल टू ठीक है, है ना, ठीक है। बिकॉज द impersonal Brahman is the spiritual ray of Krishna, and super soul is the all pervading partial expansion of Krishna. विश्व रूप जो दिखाया था कृष्ण ने, that is the super soul. अर्जुन को दिखाया था ना विश्व रूप। विश्व रूप में क्या दिखाया था उन्होंने? What could Arjun see? He could see के सिर के, उनके जो सिर के पार्ट्स हैं, वहां पे पहाड़, हिमालय, नदियां, वो सब he could see. Around his feet he could see all the patal loks. In the middle he could see earthly planets. He could see himself standing there. कुरुक्षेत्र का युद्ध he could see. तो भगवान की बॉडी में ही he saw all the things of the universe. This is Vishwarup. He is made up of all of this. All these are parts. All these trees, plants are the hair of Krishna. ये सब वो एक्चुअली देख पा रहे थे. But he could also see time. टाइम क्या? कृष्ण का मुंह खुला हुआ था, मतलब वो विश्व रूप का मुंह खुला हुआ था और सब मुंह में जा रहे हैं, मतलब एवरीबडी इज कॉन्स्टेंटली डाइंग बिकॉज टाइम इज ईटिंग एवरीवन. सो दैट इज विश्व रूप, दैट इज द इम्पर्सनल ब्रह्मन, है ना. दिस इज द ऑल परवेडिंग एक्सपेंशन ऑफ कृष्ण. So the impersonalist and the meditator, they are also indirectly Krishna conscious, indirectly है, लेकिन उनको हम नकार नहीं सकते. They are also हमारे भाई बंधु, भक्त की कैटेगरी में आएंगे. They are partial. But a directly Krishna conscious person is the topmost transcendentalist. Why? Because such a devotee knows what is meant by Brahman and Paramatma. क्यों कृष्ण कॉन्शियस टॉप मोस्ट है? क्योंकि एक कृष्ण कॉन्शियस भक्त को ब्राह्मण की भी नॉलेज है, परमात्मा की भी नॉलेज है, और भगवान की भी नॉलेज है. लेकिन जो ब्राह्मण है, जो बिल्कुल लोएस्ट लेवल पे है, उसको ना परमात्मा की नॉलेज है, ना भगवान की नॉलेज है. और जो परमात्मा तक स्थित है, उसको केवल ब्राह्मण के बारे में पता है और परमात्मा के बारे में पता है, भगवान के बारे में नहीं पता. लेकिन जो सबसे ऊपर खड़ा है सीढ़ी पे, उसको नीचे की सारी चीजों के बारे में पता है, क्योंकि वो ब्राह्मण और परमात्मा दोनों सीढ़ियों को क्रॉस करके ही भगवान की सीढ़ी तक पहुंचा है. इज इट क्लियर? सो भक्त कृष्ण कॉन्शियस पर्सन की जो नॉलेज है अबाउट गॉड इज परफेक्ट, लेकिन जो योगी की नॉलेज है वो इम्परफेक्ट है. तो योगी में हम योगा क्यों करें फिर? मुश्किल भी इतना. Nevertheless, all of these are instructed herewith to be constantly engaged in their particular pursuits so that they may come to the highest perfection sooner or later. क्या मतलब है इसका? फिर ये ब्राह्मण और परमात्मा दो वैरायटीज क्यों बनाई भगवान तक पहुंचने के लिए? कि चलो आप ब्राह्मण कि वो लोग अपनी अपनी प्रैक्टिस एंड अपने अपने एंडेवर में कंटिन्यू करते रहें सो दैट दे फाइनली रीच द टॉप मोस्ट. नास्तिक ना बने और निठल्ले ना बैठे, कुछ तो करें, कुछ तो करें. किंडरगार्टन में ही सही, एडमिशन तो ले लो, है ना. सो दैट कॉन्स्टेंटली दे आर एंगेज्ड in their particular pursuit so that they may come to the highest Krishna conscious level sooner or later. इस जन्म में नहीं तो अगले कुछ जन्मों में, at least the process has started, है ना. So the first business of a transcendentalist or a spiritualist is to keep the mind always on Krishna. One should always think of Krishna and not forget him even for a moment. Concentration of the mind on the Supreme is called samadhi or trance. Samadhi का मतलब शून्य नहीं है. Meditation on void, meditation on nothing is not samadhi. How can you meditate on nothing?
बैठ ही नहीं पाओगे आप. If somebody asks you to close your eyes and meditate on nothing, what are you going to do? If I check on you after 10 minutes. Anji? Fall asleep Exactly. meditating on nothing. All those who have their eyes closed and are meditating on shunya, nothingness, are doing nothing. They are just sleeping in tamogun. They are just practicing tamogun. वो तमोगुण की गोद में जाकर सो गए हैं. ये सब ढोंग चल रहा है योगा के नाम पे. Close your eyes and become thoughtless. Not a second can go by without a thought coming to your mind. आप थॉटलेस कभी हो ही नहीं सकते. और अगर कोई थॉट नहीं आ रही है तो ये थॉट आप फिर भी सोच रहे हो, अरे कोई थॉट नहीं आई. How can you say you are thoughtless? This is bogus. This is bogus spiritualism जो ये सब classes चला रहे हैं. But the intelligent way to do is convert all your thoughts to Krishna. कहीं भाग भी रही है, खींच के ले आओ. Convert it to Krishna. Connect it to Krishna. That is samadhi or that is trance. है ना? So, in order to concentrate the mind, one should always remain in seclusion, ekant, and avoid disturbance by external objects. क्यों? क्योंकि सभी external objects sense gratification से जुड़े हैं. सभी objects आपकी इंद्रियों को भोग में लगाने के लिए बने हैं और हमें इंद्रियों को कंट्रोल करना है. He should be very careful to accept favorable and reject unfavorable conditions that affect his realization. And in perfect determination, he should not hanker after unnecessary material things that entangle him by feelings of possessiveness. और एक point जो भारती आपने question पूछा था, that a person who is practicing spirituality sincerely will be able to apologize faster and quicker. ये भी एक लक्षण है. When there is conflict, they may take time, but they will be the first to apologize compared to a person who may be practicing spirituality but not sincerely, or maybe showing, but they are not apologizing. All these are parameters to check whether you are progressing or not. हम अपनी प्रोग्रेस ही चेक कर सकते हैं. हम नित्य सिद्धा तो कभी बन नहीं सकते इस लाइफ में. But everything connects to our behavior and how quickly we correct our behavior. Mistakes will always be there because we are all made up of rajogun, tamogun and sattvagun. सब. लेकिन गुण है. सत्वगुण में भी आ जाओगे तो वो भी एक गुण ही है. Still you are tied by that गुण. और सबकी अलग अलग डिग्रीज है. एक सत्वगुण है, एक रजोगुण है, एक तमोगुण है. बस हमने इनको रिड्यूस करने की कोशिश करनी है. तमोगुण रजोगुण को रिड्यूस करना है, सत्वगुण को इंक्रीज करना है. बस ये बैलेंसिंग इज स्पिरिचुअलिटी. बट डिवोटीज से एक्सपेक्ट करना कि दे विल बी always pure and always above mistakes, not making mistakes, is foolishness. But their conduct you will be able to see that they will take advice of the Shastra and they will take advice of spiritual people to correct the course. And they will be able to correct it also faster and apologize and move on. Move on. Bhakti does not stop for anyone. Continue with the seva. Seva will not stop. These are the parameters. Okay. In perfect determination, he should not hanker after unnecessary things. All these perfections and precautions are perfectly executed when one is directly in Krishna consciousness. Because direct Krishna consciousness means self-abnegation. So indirect Krishna consciousness क्या है? We just did. What is indirect Krishna consciousness?
ब्रह्म और परमात्मा पर ध्यान। यस, ब्राह्मण और परमात्मा को फॉलो करना। व्हाट इज फॉलोइंग ब्राह्मण? निराकार रूप, ब्रह्म ज्योति, निराकार रूप, शून्य। हाँ। एंड व्हाट इज परमात्मा? जो हृदय में बैठे परमात्मा पे ध्यान। Super soul. हाँ, सुपर but what is the practice? कृष्णा The जी, full- How do you know who is following Paramatma? जब भगवान को, कृष्णा जी को सेंटर में रख के जो हम जब काम करते हैं, मतलब हम परमात्मा के साथ के तरफ जा रहे जो हैं। योगा में है, ध्यान जो को। हठ योगा, अष्टांग योगा, हठ योगा, जो इस तरह के योगा को प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपनी सारी लाइफ निकाल दी इन ऑल दीज काइंड ऑफ योगा, दे आर एक्चुअली ट्राइंग टू कनेक्ट विद परमात्मा। जो ये योगा के पोस्चर्स कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, है ना, दिस इज, दे आर पार्शियल कृष्ण कॉन्शियसनेस। माता जी, मेरे को एक बात जो थोड़ी परेशान कर रही है कि जैसे हम योगा करते हैं, सब बोलते प्राणायाम मैंने करो, आपका ये breathe in। क्वेश्चन लास्ट टाइम भी सॉल्व किया था, आंसर किया था। यू हैव आस्क्ड द सेम क्वेश्चन अगेन, दैट योगा फॉर द बॉडी इज डिफरेंट फ्रॉम योगा फॉर द माइंड। जी। बॉडी के लिए तो योगा आपने करना ही है, लेकिन भगवान को पाने के लिए योगा कर रहे हो क्या? हम वो बात कर रहे हैं। डोंट कंफ्यूज इट विद गुड हेल्थ। गुड हेल्थ के लिए योगा करना है, हम भगवान को पाने की बात कर रहे हैं। यहाँ पे लोग हठ योगा, अष्टांग योगा भगवान को पाने के लिए करते हैं। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? जी जी। सो योगा करना गलत है? नहीं, गलत नहीं है, बट जो जब तक अपनी बॉडी को हेल्प कर रहा है तब तक तो सही है। लेकिन ये सोचे कि हम अब योगा करके भगवान को पा लेंगे, वो सोच गलत है जी। गलत नहीं है, इट इज एन इनडायरेक्ट वे ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। मुश्किल है, कृष्ण नहीं मिल पाएंगे। So all these perfections and precautions are perfectly executed when one is directly engaged in Krishna consciousness, because direct Krishna consciousness means self-abnegation. Direct Krishna consciousness मतलब अपनी नीड्स को पीछे रखना और कृष्ण की सेटिस्फैक्शन को आगे रखना, या सबसे परम प्रथम रखना, इज डायरेक्ट कृष्ण कॉन्शियसनेस। और ये अष्टांग योगा, हठ योगा करना, ये एक्चुअली हम अपने लिए कर रहे हैं, कृष्ण बाद में आएंगे उसमें, इसलिए ये इनडायरेक्ट है और ये इम्परफेक्ट है, क्योंकि उसमें हमारी अपनी एम्बिशंस जुड़ी हुई हैं। I want to become famous also. I want to be known also as this yogic master. और मुझे वो सारी योगिक सिद्धियां भी चाहिए जो हठ योग करने से आ जाती हैं। मेरी आकांक्षा है, मतलब मेरी एम्बिशंस हैं। जितने भी योगी हैं उनकी एम्बिशंस होती हैं, और जब उनको सिद्धियां मिल जाती हैं तो देन दे वांट टू यूज दो सिद्धियां ऑल्सो। ये रावण, हिरण्यकश्यपु, दे वर ऑल योगीज, दे वर ग्रेट योगीज, इतनी सिद्धियां थी उनके पास। They were practicing Hatha Yoga and Ashtanga Yoga for so many years. But उससे क्या हुआ? क्योंकि वो indirect form of Krishna worship है, वो खुद को ही कृष्णा समझ बैठे, मैं ही हूँ, मेरी पूजा करो। समझ आई प्रीति? जी माता जी, समझ आ इसलिए गया। वो indirect method dangerous है, क्योंकि हम, लेकिन direct method में हम अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं और कृष्ण की इंद्रिय के सेटिस्फैक्शन के लिए ज्यादा काम करते हैं, इसलिए ये सेफ है और इसमें रिजल्ट्स भी मिलेंगे, क्योंकि ये डायरेक्ट है। और सिर्फ इसी पद्धति में, डायरेक्ट कृष्ण कॉन्शियसनेस में ही इंद्रियों की कंट्रोल है, भ्रमण में नहीं है, परमात्मा में नहीं है। और माता जी आपने बताया था ना अष्ट सिद्धि, तो वो जैसे हनुमान जी छोटे हो जाए, बड़े हो जाए, वो मतलब लुप्त हो जाए, प्रकट हो जाए, अप्रकट हो जाएंगे, जो हम हनुमान चालीसा में गाते हैं ना, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, तो वो अष्ट सिद्धियां वो सिद्धियां हैं जो अभी माता जी ने एक बार बताया था, स्लाइड दिखाई थी किसी हाँ, लघीमा सिद्धि, अणु सिद्धि, है ना, छोटे से छोटा बन जाना, बड़े से बड़ा बन जाना। बट हनुमान
he was also an Ashtanga yogi, but he used everything in the service of the Lord. जी यस, आप ये हनुमान जी को हम नहीं काउंट कर सकते इसमें जी. Because of this reason, you should know that. जब वो छोटे बच्चे थे तब उन्होंने अपनी सिद्धि का इस्तेमाल किया था अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए. ये सूरज एक फल है, मैं इसे खा जाऊं, अपने उसके लिए he used his power. So therefore he was cursed that you will forget this power because you misused it. है ना? Then he started using it. After that, of course, they said that he was just a child. बच्चे को क्या पता है ना? He was not even an adult. So if you're using all your powers to satisfy the Lord, then that is direct Krishna consciousness. Otherwise, अगर आपको सिद्धियां अपने enjoyment के लिए चाहिए, डर है, आप रावण बन सकते हो, हिरण्यकश्यप बन सकते हो, दानव बन सकते हो, इन सबके पास सिद्धियां हैं. They were all yogis. I mean, Ravan was a Chaturvedi. He knew all the 4 Vedas. इतना ज्ञानी था वो. But there is danger, है ना? मतलब वो उससे इतना घमंडी हो गया कि भगवान को चैलेंज कर लिया, भगवान की वाइफ को किडनैप कर लिया. इमेजिन, मदर को किडनैप कर लिया, इतना घमंडी हो गया. सो घमंड का बहुत डर रहता है, इसलिए कृष्ण कॉन्शियसनेस इज द सेफेस्ट. बाकी सब में घमंड आएगा ही आएगा. So, when one is not attached to anything, but at the same time he accepts everything in relation to Krishna, one is rightly situated above possessiveness. On the other hand, one who rejects everything without knowledge of its relationship to Krishna is not as complete in his renunciation. This is the Chintamani of Krishna consciousness. This is the most valuable gift of Rupa Goswami. Bhakti Rasamrit Sindhu is not there anywhere in any other sampradaya except in this Brahma Madhva Gaudiya sampradaya. Where what is he saying? He has taken bhakti, the understanding, practical understanding of bhakti to its ultimate level. वो क्या कह रहे हैं? That even if those people who in the name of spirituality reject everything without knowledge of its relationship to Krishna, मतलब अपनी इंद्रियों को रिजेक्ट कर रहे हैं या अपनी मटेरियल वर्ल्ड में जो चीजें यहाँ पे अवेलेबल हैं और हमारी जो सेंसेस हैं इनको हम रिजेक्ट कर रहे हैं. जो लोग इसको रिजेक्ट कर रहे हैं कि नहीं, दिस इज नॉट भक्ति एंड let me not indulge. Rupa Goswami is saying, use all of them also in the service of Krishna. Why would you reject anything of the material world? Everything belongs to him. So use your senses also in his service. Use all the materialistic desires in his service. Use all your 5 senses and your subtle senses in his service. Why reject? This is a higher understanding. Otherwise, yogis are saying reject, mat socho, mat karo. वो मत करो से होगा नहीं. माइंड इज वेरी ऑब्स्टिनेट. जो चीज उसको बोलोगे मत करो वो सबसे पहले करेगा या उसके बारे में ज्यादा सोचेगा. रूप गोस्वामी सेइंग डोंट से मत करो, यू से करो, कृष्ण के लिए करो. तो आपकी इंद्रिय तृप्ति भी हो गई लेकिन आपने सेवा भी कर ली. सो स्लोली योर अटैचमेंट टू दैट इंद्री विल diminish. This is Bhakti Rasamrita. Yes, Anjali. This second half of this paragraph I did not understand. On the other hand, one who rejects. This is what I'm saying right now. एक तो है when one is not attached to anything. One is not attached, but at the same time accepts everything in relation to Krishna. He is rightly situated above possessiveness. कि मेरे पास मेरा जो है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा. ये हो गया. On the other hand, one who rejects everything. Somebody says, oh, you know, उसको by birth supposing उसको एक बहुत riches मिली हैं, he's born in a rich house or he's got good parents, and he says no, what is that? Brahman Satya Jagat Mithya. I'm rejecting all of this and going to the jungle. Is also foolishness. भगवान ने आपको दिया, उनका प्रसाद समझ के इस्तेमाल करो, उन्हीं की सेवा में लगा दो.
Why do you want to artificially renounce your wealth, your family, your possessions? You will not be able to overcome that feeling of possessiveness even if you reject all of it and go in the jungle and sit. वो आपको याद आएंगी. And ultimately you will fall down and come back to them. Does it make sense? So those who are rejecting everything without knowledge के सब कुछ कृष्ण का ही तो है ना. If you're born in a rich house also is because of Krishna's plan only, no? So they are also not complete in their renunciation. They can't be called renounced. This is Falgu Vairagya, monkey renunciation. Oh, मैं सब कुछ छोड़ के जंगल में जा रहा हूँ. तेरा है क्या वैसे भी जिसको तू छोड़ रहा है? Nothing belongs to you anyways. What are you saying that I'll leave everything and go? Balki stay there, do your duties and do it according to the instructions of Krishna. This is the real understanding. और अपनी wealth को कृष्णा के instructions के हिसाब से इस्तेमाल करो instead of renouncing your wealth. है ना? It's so practical. So, okay, I'll have to take a break again. You can read the remaining 2 paras and discuss amongst yourself. I'll come back. Okay, I will just read the paragraph. Is that okay? Yes, Vaiji, you can read. Okay. Yes, read. A Krishna conscious person well knows that everything belongs to Krishna, and thus he is always free from feelings of personal possession. As such, he has no hankering for anything on his own personal account. He knows how to accept things in favor of Krishna consciousness and how to reject things unfavorable to Krishna consciousness. He is always aloof from material things because he is always transcendental and he is always alone, having nothing to do with persons not in Krishna consciousness. Therefore, a person in Krishna consciousness is the perfect yogi. Any thoughts, anybody? It is quite self-explanatory. Yeah. Okay, go ahead, Anjali. The crux of this is a Krishna conscious person ekdam he knows for sure that everything belongs to Krishna, nothing belongs to me. So he has absolutely no sense of possessiveness over anything, a small thing or a big thing, anything in this world, nothing belongs to me. And hence he knows and learns how to accept things which are favorable to Krishna consciousness. And at the same time, on the other hand, he also rejects things which are not favorable for Krishna consciousness. Then he will also always be aloof from material things. So I think we can be in the midst of things. You can be in the midst of everything, but still use everything for Krishna consciousness and not for our. So you don't have to stay away from all of these things. Right. You can be in the midst of everything. Yes. And use everything for Krishna consciousness. Right. And he will avoid the company of persons who are not Krishna conscious. Yes. है ना? अगर वो ऐसे लोगों के साथ रहेगा तो कहीं ना कहीं तो असर आएगा ही ना.
ये है। इस तो इसलिए दुनिया वे में रहकर भी remain fully Krishna conscious, Yeah. use Mm. all of the things, even if material things, but once you use it in in the right direction, or like dovetail it in Krishna's seva, so you don't have to reject them or avoid them. You can simply change their usage. like Remain in the Mataji middle gave an of example of everything. money. If you have got Hmm. so much of money, you Yeah. belong to a rich family, you can Hmm. spend that money in Krishna seva, like prasadam है Hmm. या जो उनके लिए Everything. Everything, all the हाँ, material, you know, उसमें सब ये जी कृष्ण जी की जी सेवा हाँ में जी है. हाँ प्रभु जी That is कृष्णा जी perfect की yogi. सेवा में. हाँ तो हम तभी वो परफेक्ट योगी कहलाएंगे, पूर्ण योगी. बिल्कुल. जी जी. जैसे माता जी ने एग्जाम्पल दिया था कि आप ये सोच के रहे हैं कि भगवान कृष्णा जी ने घर दिया है, तो उसी घर में हम रह रहे हैं, उसकी सफाई करनी है, उसके बारे में सोचना है, भोजन बनाना है, तो भगवान ने दिया है रॉ मटेरियल, उसी को उनके लिए भोजन बनाना है, प्रसाद बनाना है. इस तरह की भावना से अगर हम काम करेंगे तो कहीं ना कहीं इसमें आगे बढ़ेंगे, तो कृष्ण कॉन्शियस में आएंगे, तो वो हम फिर पूर्ण योगी बन सकते हैं, परफेक्ट योगी बन सकते हैं. हाँ जी. So any questions, any doubts about the last two paras? We explained all this to each other. We were talking about these Who two explained? paragraphs Who only. explained? Anjali. Anjali, YG, and Preeti. All three of us. Wow. Even माता Bharti जी added मैंने a little bit. Yeah. Bharti also added. Vinu and Bharti. So, Yes. That everything belongs to Krishna, and thus he is always free from feelings of personal possession. So मतलब if you are always having this feeling that everything belongs to Krishna, तो आपके पास बहुत सारी wealth हो, beautiful wife हो, बहुत लायक बच्चे हो, आप कभी proud ही नहीं बनोगे. आप हमेशा ये मान के चलोगे, अरे उन्होंने दिया है, मेरे में तो कोई लियाकत ही नहीं. You're safe. You're always safe, and you're getting to enjoy also. वो सारी चीजें आप एंजॉय भी कर रहे हो, लेकिन आप सिंसियरली मान के चल रहे हो मुंह से. तभी आपने हमारी सभ्यता देखी हो, तो हमारी लैंग्वेज में ही ये सब इनबिल्ट था. भगवान का दिया सब कुछ है, भगवान की कृपा से चल रहा है. ये हमने इंटरनलाइज किया हुआ था, ये सिर्फ बातें नहीं थी करने के लिए. इसलिए ये हमारे लैंग्वेज में ये चीजें आई हुई हैं, बिकॉज हम ये मान के चलते थे कि वी आर नॉट क्वालिफाइड फॉर एनी ऑफ दिस. वाकई ये उन्हीं का दिया हुआ है ना. राइट नाउ मैंने इनहेल जो किया और एक्सेल किया, कोई मेरी गारंटी नहीं है कि मैं दोबारा इनहेल कर पाऊंगी. कृष्ण ही करवा रहे हैं. मेरी अगली सांस भी वही दिलवा रहे हैं मुझे. मेरी मजाल कि मैंने जो खाया है वो मैं अपने आप पचा पाऊं. आई हैव नो कंट्रोल. एक बार जब खाना यहाँ से नीचे उतर जाए, आई हैव नो कंट्रोल पेट में जाके उसका क्या हो रहा है. कृष्ण सेज आई एम द जठराग्नि, आई एम द फायर ऑफ डाइजेशन. Everything is because of him. Even our food is getting digested because of him. He's saying it. He's clearly saying, I am the fire of digestion in human beings. फिर भी आदमी समझता है कि मैं कर रहा हूँ, है ना. So if you can just go back to why ये चीजें हमारे संस्कृति में थी, भगवान की कृपा से, भगवान की वजह से, भगवान का दिया सब कुछ है. It was because this was our Vedic culture. हम ये मान के चलते थे कि बाकी हम कुछ नहीं है उसके बगैर. So such a person को possessiveness नहीं आएगी. जो possessiveness की बीमारी है, मेरा तेरा, इससे वो बचा रहेगा या कम होगी. Even if he cannot get rid of it completely, it will be less. He knows how to accept things in favor of Krishna consciousness and how to reject things unfavorable to Krishna consciousness. And he is always aloof from material things because he is always transcendental, and he is always alone, having nothing to do with persons not in Krishna consciousness. Therefore, a person in Krishna consciousness is the perfect yogi. Prabhupada is explaining, ये है योगा. ना कि आप बैठ जाओ मेडिटेशन में, अष्टांग योगा में, स्पाइन इरेक्ट, आंखें बंद कर लो, कुछ एक्सोटिक म्यूजिक चल रहा है पीछे, कुछ धाकड़ से मंत्र चल रहे हैं, और अंदर यू आर फुल ऑफ काम, क्रोध, मोह, लोभ, ये मेरा, इसके बाद जाके मैंने ये करना है, नाउ आई विल बी नोन फॉर दिस. कुछ करने की, द कृष्ण कॉन्शियस पर्सन इज अ हायर योगी, जो ना तो ये सारे जिम्नास्टिक्स कर रहा है. प्रभुपाद यूज्ड टू कॉल इट जिम्नास्टिक्स. ये जितने भी हम पोस्चर्स करते हैं,
he does not have to do all these gymnastics yet उसको लेकिन वो practical result मिल रहा है of detachment, of not feeling possessive, of being humble. So योगी का तो यही मतलब है ना, योगी योगा करने क्यों चला था? इन चीजों से छुटकारा पाने के लिए चला था ना, कि मेरे अंदर डिटैचमेंट आ जाए, है ना, मैं अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर लूं, इसलिए हम योगा करने निकले थे ना। वो कृष्ण कॉन्शियसनेस में स्वाभाविक रूप से ही आ जाता है, बिकॉज आप हर चीज को कृष्ण के साथ जोड़ रहे हो। यस मीना, आप कुछ कह रहे थे? अच्छा, आई थॉट यू रेज्ड योर फिंगर। सो जो माता जी ये जो लास्ट पैराग्राफ है और जो ये पूरा श्लोक है, इसमें वो भक्ति हरि भक्ति विलास का जो है, अनुकूलस्य संकल्पा प्रतिकूलस्य वर्जनम रक्ष्यस्ति विश्वासो गोत्रिक्त वर्णम अति आत्म निपेक्ष कपि वयम षट विद्या शरणागति। तो यही हुआ ना कि अनुकूल है जो उसको एक्सेप्ट करो, और जो प्रतिकूल है उसको छोड़ दो, और भगवान हमारी रक्षा करेंगे उसका हमेशा विश्वास रखो। और 6 मेहनत, तो और भगवान के लिए हमेशा क्या कहते हैं उसको, आभार रहना, मतलब कि ऑब्लाइज रहना कि वो जो कुछ है वही कर रहे हैं, और जो कुछ है भगवान ने दिया है वो उन्हीं का सब कुछ है, और जो शरणागति है उसके भी अभिमान को त्यागना। महाराज जी कहाँ है ये आप लाइन आप मुझे पढ़ी है? मैंने सॉरी नहीं, मेरे को इससे मैं देख के मुझे ये श्लोक याद आया, कहीं पढ़ा था। तो गिव द रेफरेंस भी ना, शी इज आस्किंग, बताओ कहाँ से पढ़ा है? ये हरि भक्त विलास में 11.676 है, और इसमें ये श्लोक है। ये बहुत माता जी ये नहीं पता, लेकिन मैंने ना वो लेक्चर्स में सुना है, तो बहुत जगह जो गुरु महाराज जी वगैरह है ना, तो वो ये हमेशा कहते हैं कि जो अनुकूल चीजें हैं, मतलब हम कहते हैं ना कि हमें भक्ति करनी है, तो भगवान, जैसे इसमें आ रहा था कि भगवान की वस्तुओं को छोड़ देना कि ये मटेरियल है, तो तब वो ये समझाते हैं कि जो भक्ति के अनुकूल है उसको एक्सेप्ट करना है, जो उसके विपरीत है, प्रतिकूल है, उसको त्यागना है। तो वो इस श्लोक को बहुत बार जो प्रीचर्स हैं उसको नरेट करते हैं। These are the 6 limbs of surrender. शरणागति, शरणागति के 6 अंग हैं। कोई पूछे ये, this is the beauty of प्रभुपाद। उन्होंने हर चीज की प्रैक्टिकल करना क्या है वो बताया, अदरवाइज आपको पता कैसे चलेगा करना क्या है। So he has explained how do you surrender। सब कहते हैं हम भगवान में शरणागत हैं, हमने सब कुछ भगवान पे छोड़ दिया है। That's foolishness। आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भगवान पे छोड़ दी, मैं सब कुछ छोड़ दिया, मैं कुछ नहीं देखने वाली, बच्चे अपने आप पास होते हैं तो वो, घर चलता है तो चले, मैंने सब कुछ उन पे छोड़ दिया। अरे भाई, तो तुम्हारी ड्यूटी है, तुमने करनी है, क्या छोड़ दिया तुमने ऊपर उनके ऊपर? छोड़ना है अगर तो वो ये छोड़ना है, अनुकूलस्य वर्जनम प्रतिकूलस्य, मतलब जो आपकी इंद्रियों को कंट्रोल में ला रहा है, ऐसी एक्टिविटीज को अडॉप्ट करो, और जो लोग और जो एक्टिविटीज आपकी इंद्रियों को ज्यादा एंगेज कर रही हैं उनको छोड़ो। छोड़ना ये है, सेंस ग्रेटिफिकेशन छोड़नी है, नॉट के रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ के मैंने सब कुछ उन पे छोड़ दिया, जो वो करेंगे उनके ऊपर है। एफर्ट तो तुम्ही ने डालना है, यू हैव बीन सेंट हियर टू मेक दैट एफर्ट। So accepting those things which are favorable and rejecting all those people and activities which are unfavorable to controlling your senses. And then having this strong faith, vishwaso. What is the vishwaso? Rakshishyatiti. Avashya rakshite Krishna. Ye drid vishwas ho, goptritve varnam tatha. Krishna is going to give me protection, come what may. And accepting the Lord as one's guardian or master, full of surrender and humility. वही मेरे असली गार्डियन है, not my bank balance, not। एक बार प्रभुपाद को पूछा था, how do you practice humility? हम सबको लगता है नहीं हम्बल बनना है, हम्बल बनना है। हम्बल मतलब क्या? डोरमैट बनना है, सबके हाँ में हाँ मिलाना है, सबके पीछे पीछे चलना है। हम्बल मतलब क्या? Prabhupada explained it in one line. Humble means
to be convinced that nothing can save you except Krishna. How many of us have that? हमें लगता है अरे नहीं यार, we have contacts in such and such, तो कोई भी मुश्किल होगी तो हमारे कॉन्टैक्ट्स काम आ जाएंगे, या मेरे ये घर वाले, इनके ऊपर मैं डिपेंड कर रही हूँ, ये तो मेरे काम आ ही जाएंगे, या मेरा बैंक बैलेंस, मेरी वेल्थ, मेरे कनेक्शंस. वी फॉल बैक ऑन दीज थिंग्स जब मुश्किल आती है. भगवान को लास्ट में सोचते हैं. वी आर स्टिल कन्विंस्ड कि दीज आर द थिंग्स दैट विल प्रोटेक्ट मी, है कि नहीं? बट ह्यूमिलिटी मीन्स रियली हैविंग दैन्यता, completely dependent on him. सब मुझे छोड़ जाएंगे, सारी चीजें मुझे छोड़ जाएंगी, only he will be there to look after me. और ऐसे लोग fearless होते हैं, वो जंगल में भी जा सकते हैं because they know they have this firm conviction, अवश्य रक्षिबे कृष्ण. अगर सामने से शेर भी आ जाता है, they are sama, that he can't do anything to me because Krishna is there. This is the meaning of surrender, है ना? मतलब सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रिय तृप्ति से कंट्रोल, संयम करना, और उन लोगों के साथ ना मिलना जो इसमें ज्यादा इन्वॉल्व है, छोड़ना. दिस इज द मीनिंग. अनुकूलस्य संकल्पः, प्रतिकूलस्य जो अगेंस्ट है इंद्रिय तृप्ति के, वर्जनम, छोड़ दो उनको, या कम कर दो उनकी एसोसिएशन, कम कर दो, तभी आप भक्ति कर पाओगे. मतलब आप चाहते हो कि आपके भक्ति का मक्खन जमा भी रहे, लेकिन आग जला के रखो साइड पे, कब तक बचाओगे अपने मक्खन को? आग से दूर होना पड़ेगा ना, एसी के पास जाना पड़ेगा. तो आग वाला कमरा छोड़ना पड़ेगा, एसी वाले कमरे में जाना पड़ेगा. यू विल हैव टू लीव. ठीक है? ये भक्ति विनोद ठाकुर जी ने लिखा है क्या? सो आई एम फॉरगेटिंग, मुझे पता नहीं है. You can check, it's all there. Okay, so we are done for today. Any questions, any realizations? How was the class for today? YG, Sheetal, 4 वर्स किए ना हमने आज? नहीं, हमने 3 किए हैं, 8, 9, 10. 8, 9, 10. अच्छा, 11, 12 करना है क्या? कर माता लेते जी अगली क्लास में करते हैं माता जी. पास. कर लेते हैं. Let's do it. YG, because explanation बिल्कुल नहीं दूंगी, ऑलरेडी हम सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं. We will just read. Okay. YG, माता जी आई हैव टू लीव प्लीज. okay. ठीक है, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. YG, okay, she's gone. Who wants to read? Ma'am, YG. actually read what? Which one? 11, 12. 11, 12. Okay, just give me a second. Yeah. Shuchau deshe pratishthapya sthiramasanamaatmanah natyuchittam nati nicham chailajina kushalottaram tattaigagram mana kritva yata chittendriya kriyah upavishaya vyasena yasane yundat yogam मेरा इंटरनेट खराब है या YG का? YG का. अच्छा. practice yoga, one should go to end with the skin and a soft. Okay, let me just try from some other place. How is it now? Can you hear me? Yeah, continue.
Is this better? Yeah. Okay. To practice yoga, and should lay kusha grass on the ground and then cover it with a deer skin and a soft cloth. The seat should be neither too high nor too low and should be situated in a sacred. Yogi sit on it very firmly. Yoga purify by controlling his masses and active and fixing the mind on point. Okay, I think people are leaving one by one, so let's leave this. But this gives you an idea कि ये वाला योगा देखो कितना टफ है. जंगल में चले जाओ, है ना, डियर स्किन बिछा लो, एकांत में बिल्कुल अकेले बैठ जाओ और स्थान ना ऊपर हो नीचे हो, बिल्कुल मीडियम पे हो, कुशाग्रास हो, फिर उस पे प्रैक्टिस योगा टू प्योरीफाई द हार्ट बाय कंट्रोलिंग. और वहां बैठकर माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश करो और अपनी सेंसेस को कंट्रोल करने की कोशिश करो और अपनी एक्टिविटीज को कंट्रोल करने की कोशिश करो एंड फिक्सिंग द माइंड ऑन वन पॉइंट. सो जब ये बताया अर्जुन को, द ग्रेट धनुर्धर, greatest archer of the world, said, I'm sorry Krishna, I can't control my mind. So अगर वो कह रहे हैं कि माइंड कंट्रोल नहीं हो सकता, तो आपके और मेरे कलयुग वासियों के लिए क्या होगा? So वो आपको बताएंगे. अभी तो कृष्णा इज इंट्रोड्यूसिंग टू हिम ऑल द फॉर्म्स, है ना. अष्टांग योग भी कर सकते हो, ध्यान योग भी कर सकते हो, ज्ञान योग भी कर सकते हो, सब बता रहे हैं, इसको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं. And then finally he will give him his opinion when he asks कि इसमें से बेस्ट क्या है. Then he will say bhakti yoga is best. Okay. Any thoughts? YG, Sheetal, anything you want to share? Anjali, Vinu. I like the way Nitai Prabhu asks each one at the end of class. हर एक बताओ तो पता चलता है कि क्या सोच रहे हैं, है ना, क्या समझ आया उनको क्लास में, क्या उनका टेक अवे था. So I find it interesting how Krishna doesn't, force his particular way on the devotees. He's saying all of these ways are available for you. So choose whichever you want. Of course, Bhakti Yoga is the most, the right one and easiest one. So I really like it where, he doesn't force it on us. It's almost like our choice. But I think eventually we'll all realize that Bhakti Yoga is what makes sense. Yeah. Anjali, thank you for that, Raji. कोई टेक अवे आज का? The last line which we have always been saying, Hare Nam, Hare Nam, Hare Nam, Ekate. There is no other way, there is no other way, there is no. Hari Bol. So come in the morning to chant, Anjali. You must come to chant. Yes, Preeti. बीनू, आपने कुछ कहना है? मैं हरी बोल कर रही थी. अच्छा. आज का अच्छा था. मेरे को तो ज्ञान विज्ञान में थोड़ा कंफ्यूजन था पहले कि व्हाट इज विज्ञान, वो मुझे समझ में नहीं आता था. पर आज मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि प्रैक्टिकल जो हम नॉलेज है हमारी, वो विज्ञान है. तो ये मेरा आज क्लियर हुआ है. पहले मैं सोचती थी ज्ञान विज्ञान मतलब क्या होता है. ज्ञान विज्ञान में स्पिरिचुअली रिलेट नहीं कर पाती थी. विज्ञान was generally science and technology kind of. जैसे योगा पहले सिर्फ हम योगा ही समझते थे, अब समझ में आ गया व्हाट इज योगा. अब ऐसे आज क्लियर हो गया व्हाट इज विज्ञान. जय श्रीला प्रभुपाद. Amazing. Only because of Prabhupada. Gyan is theory, Vigyan is practical.
और वो एग्जाम्पल देते हैं, केमिस्ट्री आप स्टूडेंट जो है किताबी नॉलेज इज ज्ञान और प्रैक्टिकल सारी नॉलेज इज क्वेश्चंस याद कर लेता है वो, लेकिन उसको फिर प्रैक्टिकल जाके देना पड़ता है, वो पानी बना के दिखाना पड़ता है, H2NO को मिलाकर बीकर में दिखाना पड़ता है ये पूरा पानी दिखाना। बना। सिर्फ H2 और O जानने से और इक्वेशन लिखने से नहीं चलेगा, पानी बना के दिखाओ। बना के right. दैट इज द रियल लर्निंग, कि आपको समझ में आ गई बात। सो यस, हम पढ़ रहे हैं लेकिन वो प्रैक्टिकली लाइफ में जब तक उतारेंगे नहीं तब तक इट इज जस्ट ज्ञान। एंड वी विल बिकम अ प्राउड पंडित if you do not convert it, तो हम सिर्फ ज्ञानी बन जाएंगे and we will go around showcasing our knowledge, और कोई चेंज नहीं आएगा हमारी नेचर में, स्वभाव में, एंड जब मुश्किलें आएंगी तो हम उसको हैंडल नहीं कर पाएंगे, एंड we will also be no different from the materialistic people. पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि वैष्णवजन की जय, श्री जय। प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंद, हरि हरि बोल, हरि हरि हरि। जय जय